वेलकम बैक टू ASports HD, पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल। और अब आपको क्लोजिंग सेरेमनी में खुशामदीद कहते हैं जो GFS कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2022 की होगी। 5 दिन के दिलचस्प मुकाबलों के बाद वी हैव क्राउंड आवर विनर्स एंड वी आर ऑनर्ड to have been joined by some of the dignitaries over here who are part of our presentation ceremony. मैं सबका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले the honorable chief guest Governor Sindh जनाब मोहम्मद इमरान इस्माइल, जिनके साथ तशरीफ रखते हैं ARY Digital founder and group CEO Salman Iqbal. We of course have the squash legend and chairman of the Sindh Squash Association जनाब जहांगीर खान साहब. Then we have our title sponsor, GFS की CEO, Janab Irfan Waheed. Administrator, DHA, Brigadier Rai Asim Mustafa Saab. And on behalf of the AKD group, we have, we don't have Mr. Amichano, apologies for that. And we also have Mr. Muhammad Zakir Ali, owner of Inverex and a patron of all sports in Pakistan. इससे पहले कि हम आज के इनामात तकसीम करें, we have a special token of appreciation lined up over here. DHA Administrator Janab Brigadier Rai Asim Mustafa Saab would like to honor SN Ramzan, जो अभी हाल में ही IBSF World Snooker Championship जीते, the 16-year-old snooker prodigy from Pakistan. Ladies and gentlemen, SN Ramzan. What an honor for Pakistan to have this young prodigy represent us. और हमारी दुआ है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए इसी तरह इनामात और एजाज़ात जीते. ये एक छोटा सा तोहफा SN के लिए. Ladies and gentlemen, a round of applause for the IBSF World Snooker Champion, SN Ramzan. Now, before we proceed with the prize distribution ceremony, I would like to request our honorable chief guest, Janab Imran Ismail Saab, Governor Sindh, to please say a few words on this auspicious occasion. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm very honored and glad to see this tournament happening in Karachi, which is my city. I was born and raised here. And I saw, in this very city, I saw the great Jahangir Khan, the legend of Pakistan, carrying the flag of Pakistan and winning for over 10 years consecutively, be it British Open, be it World Open, be it any Open Squash Championship. We could have easily bet on it that Jahangir Khan is going to take us with pride and walk out with dignity and the flag of Pakistan. I would love to see more Jahangir Khans coming up in future. I would like to invite my young generation to focus on the games besides cricket. We are very proud of our cricket players who are performing very well these days, and especially when the World Cup, when I was witnessing in Dubai, when they beat India with 10 wickets margin, what never happened before in the history of Pakistan Indian cricket. And then the games which are not very much played in Pakistan, like squash itself, but Jahangir Khan is doing a lot for new squash courts, and I wish him all the best for promoting squash in Pakistan. And our young generation should learn the lessons and should repeat the history where Jahangir Khan left. They should come forward and take the flags ahead. I would like to appreciate the efforts put in by the Rangers. The DG Rangers personally is very interested in promoting sports ever since he came into this position. He has always been very fond of promoting sports. He took me to a stadium in Liari where the boxing championship was happening, and the young boxers Liari is producing is amazing to see them in action.
So I'm glad once again Karachi is getting the is again becoming the center of the sports happening. Just now, Salman Iqbal told me that they are, under the banner of ASports, they are going to hold a mega event in Karachi, something like Olympics, and all these sports, they are going to promote those sports, and be it javelin throw, be it football, be it hockey or anything else, they are going to promote those sports, and then all those winners will get the big sponsors so that they can follow on their careers, and they should not stop looking for the sponsors anymore. There's a great effort, Salman. Thank you very much, and I assure you a full cooperation. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Governor Saab. And I will take this opportunity to, in fact, ask Mr. Salman Iqbal, the founder of the ARY Digital Group and the CEO of the group, to please say a few words and explain the ACE Games initiative that ARY is taking. And also, let me also remind everyone that this is the first time in the history of squash in Pakistan that you've seen live HD action and coverage of such a tournament. So hats off to ASports Digital, hats off to ASports HD. Salman Saab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Chief Guest, Governor Sindh, of course our legend, Jahangir Khan Saab, all the sponsors of Karachi Open Squash Championship. I am really thankful to all of you for supporting this endeavor. This was a concept and the brainchild of the Rangers. DG Rangers has been working really hard to make sure this event becomes very successful. It's an honor. When we were little kids, we used to see Jahangir Saab and Jamshed Saab play squash on TV. उस ज़माने में हम लोग को याद है कि बहुत मुश्किल से हमें कवरेज मिलती थी और हम लोग जो है ना बड़ी डिश लगा के हम इनका जो है ना टूर्नामेंट देखते थे. And it's good to see. I was watching ASports that day, and I was watching squash after a very long time on a sports channel. It actually made us proud. And ये कहते थे, दिल कहते थे कि जो स्पोर्ट्स है ना वो एक चीज़ है जो यूथ को और यंगस्टर्स को साथ मिलाती है. जहांगीर भाई, this is a very great initiative. I think we should have more of this in Pakistan. Sports is one thing that actually gets the whole country together. आप अगर देखें खा वो वर्ल्ड कप हो, खा वो क्रिकेट हो, खा वो टेस्ट मैच हो, खा वो PSL हो, हम जब भी साथ क्रिकेट देखते हैं बैठ के तो हम एक कौम और एक मुल्क बन जाते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स. सो स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग दैट शुड बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट. ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है, मगर उसके बावजूद हम प्राइवेट सेक्टर कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इस मुल्क के अंदर और बढ़े. और ADHA का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो स्नूकर का बच्चा था उसको स्पॉन्सर किया. ऐसे और स्पॉन्सर्स चाहिए. इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को हाथ में ले लेंगे तो ये हमारे जो बच्चे हैं कल के, ये सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज़ बन जाएंगे. थैंक्स टू GFS, इन्वेरेक्स, अकील डैडी, ऑल द स्पॉन्सर्स कि ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं और ये हमारे जो कल की जनरेशन है ये बड़े नाम बने, उनको दुनिया के अंदर उनकी पहचान हो. तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जो वो स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, हमने इनिशिएटिव लिया है कि हर 4 साल में 2 दफ़ा वो स्पोर्ट्स करवाएंगे. कराची में स्पेशली दुनिया भर से, पाकिस्तान से सारे प्लेयर्स को हम बुलाएंगे कराची में. इट बी अ मंथ लॉन्ग कवरेज एंड ऑल द स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स वो खिलाएंगे. और जो उसमें एक्सेल करेगा उसको हम पिक करेंगे, ग्रूम करेंगे, फिर इन स्पॉन्सर्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि उनको फंड करें, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी खुराक में, उनकी हेल्थ में, और उनको पाकिस्तान का झंडा लेकर ओलंपिक्स में लेके जाएं. और एक भी बंदा और हमारा एक भी बच्चा या बच्ची हमारी जीत जाती है टूर्नामेंट या ओलंपिक्स में एक मेडल भी लेकर आती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सलमान साहब. और इसके साथ आपको पता चलता है कि देयर इज डेफिनेटली अ लॉट फॉर स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान. स्क्वॉश का टूर्नामेंट हो और लेजेंडरी जहांगीर खान कुछ ना कहें, दिस इज नॉट पॉसिबल. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द चेयरमैन ऑफ द सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन. Jahangir bhai, if you can just say a few words about this tournament.
Hats off to you and the organizers for putting up a wonderful show. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Governor Sindh, Salman Iqbal, founder of ARY, distinguished guest, players, अस्सलाम वालेकुम. और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इसको दोबारा रिवाइवल करने में कामयाब हो रहे हैं. और 2018 के बाद, पाकिस्तान ओपन के बाद हमने ये बड़ा टूर्नामेंट दोबारा कराया है. और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे डीजी रेंजर्स कोर कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को, जैसे बड़े स्मॉल लेवल पे टूर्नामेंट हुआ करता था डीजी रेंजर्स, और अब इसको अपग्रेड करके $50,000 का टूर्नामेंट कराया. तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है. और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जब इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, और ये बच्चों को देखने का और सीखने का काफ़ी मौका मिलता है. तो यही इस तरह के अगर फतवात हमारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जारी रहें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पास में भी हमारे पास वर्ल्ड चैम्पियन हुआ करते थे, आने वाले वक्त में भी हमारे पास काफ़ी वर्ल्ड चैम्पियन पैदा हो सकते हैं. और जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी स्नूकर का प्लेयर 16 साल की उम्र में वर्ल्ड चैम्पियन जीत कर आया है और इसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है. तो इस तरह की चीज़ें हमारे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी ऐसे टैलेंट पड़े हैं जिनको अगर हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म दें और कवरेज स्पॉन्सरशिप दें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम काफ़ी वर्ल्ड चैम्पियन पैदा कर सकते हैं. आखिर में मैं ख़ास तौर पे मैं सारे स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और उनकी शमूलियत की वजह से ये सारी चीज़ मुमकिन हुई है कि जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक से प्लेयर्स आए और उन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया. और उसके साथ साथ मैं ARY का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि पहले दिन से आखिर तक सारे मैचेस लाइव कवरेज की है. मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए और स्क्वाश के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम किया. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह स्पोर्ट्स की आगे भी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह हम आगे आने वाले वक्त में भी ऐसे नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट कराते रहेंगे. साथ साथ में मैं अपने सारे ऑर्गेनाइजिंग टीम को, अपने जितने भी लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो मीडिया के हवाले से कह लें, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से कह लें, जो भी बंदे इसमें शामिल थे, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस स्क्वाश के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए और इस पाकिस्तान के लिए इसको कामयाब बनाया. तो आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू ऑल. Thank you so much. And now let's proceed towards honoring the contestants and the finalists and the winners. शुरुआत करेंगे GFS Karachi Open Squash Championship के women tournament के साथ. We saw some intense competition and 19-year-old 𝐂𝐧𝐲 finished as the runner-up. She was unfortunate she got injured, so in her place we will have 𝐂𝐲𝐲𝐬 who will come in and accept her runners-up prize. मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ाकिर अली साहब से, the owner of Inverex, to please give the runner-up her check of $2,000. Lee, I would also request you to please stay over here and collect the runners-up shield from the Governor Sindh, Mr. Imran Ismail, Mr. Salman Iqbal, the legendary Mr. Jahangir Khan, and Mr. Irfan Waheed of GFX to please come forward and jointly present the trophy. Irfan Saab, aap bhi please, if you can join the group. 𝐂𝐲𝐲 accepting the trophy on behalf of 𝐂𝐧𝐲. And now, the winner and champion of the GFS Karachi Open Squash Championship Women's Tournament, Noor Abdul Mukarram from Egypt. Noor, I would request you to please first of all collect your winner's check from Irfan Waheed Saab, and then we will proceed with the trophy presentation. Ladies and gentlemen, a round of applause for Noor. I would now request
Governor Sindh, Mr. Salman Iqbal and Mr. Jahangir Khan to join Mr. Irfan Waheed and present Noor with her trophy. Ladies and gentlemen, the champion of the GFS Karachi Open Squash Championship 2022, Noor Abul Mukarrim from Egypt. Noor, can I just borrow you for a minute or two, just so that we can have a conversation here? If you can just pass the mic on. Noor, you've been an absolute wonder in this particular tournament. You've completely outclassed everyone. But we were looking at a good competition. It was just unfortunate that you had to retire. First of all, I didn't want it to end that way. I hope she recovers well and quickly. And it's been a lovely week for me there. It's my first time here in Karachi, and it won't be the last time because it was a lucky week for me. And thank you for all the crowd and for all the people that supported me today. It was lovely. Thank you so much, Noor, and we wish you the best of luck. Ladies and gentlemen, the champion, Noor Abul Mukarrim from Egypt. And now let's welcome the men's players who played a wonderful match. बहुत दिलचस्प मुकाबले हमें देखने को मिले पिछले 5 दिनों में. We saw some of the top players in the world compete for the GFS Karachi Open Squash Championship. I'd like to invite the runners-up, the second seed, Yusuf Suleiman, to please come forward and collect your runners-up check from the legend Jahangir Khan. On his way to the final, Yusuf dropped just one game and was absolutely wonderful throughout this entire competition. I would now like to request the chief guest, Governor Sindh, Janab Imran Ismail, Mr. Salman Iqbal, Mr. Jahangir Khan and Mr. Irfan Waheed to please present Yusuf with his runners-up trophy. Yusuf Suleiman from Egypt. And the winner of the GFS Karachi Open Squash Championship, former world number 1, Kareem Abdul-Gawad. I would request Kareem to please collect his check, winner's check from Irfan Waheed Saab, the CEO of GFS, Builders and Developers. Now, Kareem, before you collect your shield, I'd like to have a word with you just quickly, if we can just have the mic here. The number 1 seed living up to his favorite tag. And you said before the game that you had a different plan against Yusuf, and it clearly worked today. Yeah, I mean, Yusuf is a very good friend of mine. We played a few times before, so it was a very tough match today, of course. I would like to thank all the organizers for organizing this tournament. We all felt we are in our home country, so thanks for the great hospitality, and it's always, I mean, it's always a pleasure to play here in Pakistan, and I'm glad Pakistan is hosting PSA tournaments again. Thanks to all the legends, of course, for coming and watching us and supporting us, and it was just a great week for all of us. And you had an overwhelming support in the crowd here as well. Karachi seems to be a lucky city for you. Congratulations, champion, on winning another tournament. I would now like to request the Honorable Chief Guest, Governor Sindh, Mr. Imran Ismail, Mr. Salman Iqbal, Mr. Jahangir Khan and Mr. Irfan Waheed of GFS to please present Kareem Abdul-Gawad with his trophy. Ladies and gentlemen, I present to you the champion. With that, we come to the end of our presentation ceremony and the GFS Karachi Open Squash Championship. All the players will now take a group photograph, but it's all
from us over here. Till next time, Khuda Hafiz. We'll see you again.